मुनव्वरा कह रही है you don't look like a mommy, like come on dude, how? कौन से resources क्या करती हो रिसर्च के दौरान के you are able to find out how your customers are thinking? How hyped are you and how you're feeling? I'm like, so oh my god, I am a little celebrity now. Yeah, why do you need to earn? Why do you want to get rich? Why do you have to have more money? This is a real question. People are like, यार अमीर होके क्या करना है? एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ. किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है ना, and you want to करवाना चाहते हो, आपका दिल कहता है यार मैं किसी तरह इनको दे सकूं. You can do that without even thinking about it. आज के इंटरव्यू के एंड पे Anam is going to show you her very highly praised website copy sample as well. जी अस्सलाम वालेकुम. Welcome to the stream, Anam. क्या हाल है? कैसी हैं अनम? क्या हाल है? तो अनम, लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा नहीं, हम सबका आपसे ये सवाल है. टेल मी अ बिट अबाउट योरसेल्फ. व्हाट वर यू डूइंग बिफोर गेटिंग इनटू कॉपी? जरा स्टार्ट से बताइएगा. कितना स्टार्ट से, क्योंकि मैं हूँ बहुत सीनियर. But I think let's just start from graduation. तो मेरा बैकग्राउंड CS इंजीनियरिंग का है. I graduated in 2012. फिर I went ahead and got my MBA in marketing. That was in 2016, I think. Yes. हाँ, तो उसके बाद तब भी चल थी कुछ ना कुछ करने की, तो जो है, and then I further got a diploma from IB in entrepreneurial studies. Meanwhile, I was doing some कुछ ना कुछ jobs और इधर उधर. I joined a small software house. फिर I did something in a bank. उसके बाद eventually one job that actually stuck with me was when I became this marketing executive in a firm. It was a business processing की firm थी, basically North American firm थी, and they would outsource their business operations here. उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिला. So that was my, I think, turning point towards content orientation. Because they would make me do a lot of marketing promotion kind of stuff, and I was writing a lot of stuff, and I was like, यार ये काम तो मतलब मैं direct भी कर सकती हूँ. So that started with the whole content की चीज़. I started finding more clients इधर locally. मुझे लोगों ने approach करना शुरू कर दिया कि इसको इस तरह लिख दो, इसका document बना दो, and stuff like that. तो ये the thing is, when you don't realize as well, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी it builds up to be together. So I was even when I was in university or college, a lot of my friends would be like, यार speech लिख दो, ये ऐसे का end समझ में नहीं आ रहा है, इसको कर दो. Magazine, I was an editor in chief मेरे NED के जो campus magazine होता है, and I was like, ये सब बातें मुझे अब समझ में आती हैं, कि all of them got together too. But anyways, long story short, then I did a lot of content for freelancing के सूरत में, लेकिन in a sense local clients के साथ, direct clients के साथ. So why and how you got into copywriting, and what do you like the most about it? So let's start with why and how you got into copy. I ended up in copy because of pandemic. Okay, I was highly frustrated. Doing content and jobs बहुत गिर चुकी थी market से. And pandemic में सबके हालात, किस तरीके से, everybody, I think moms were number one frustrated people at that time, because बच्चे घर में, मियाँ घर में, बच्चों को घर से पढ़ाना, it was a bad situation. So I was looking for something productive, and content में मुझे वो pay rates नहीं मिल रहे थे, क्योंकि content is in itself, peanuts, until unless आपको बहुत अच्छा client ना मिले. So then I landed on your group, ऐसी फेसबुक गूगल मारते मारते मैंने कहा यार देखते हैं यहाँ कौन कौन काम कर रहा है. Then I landed on my group, and उस वक्त ही AKC की सारा announcement वगैरह शुरू हुई थी, and I was like अच्छा चलो, and my gut feeling was like I did need to learn this, like मतलब मुझे पता था कि कॉपी कुछ होती है, and sales copywriting कुछ होती है, and it's people are getting paid for it, but I had no idea कि locally ये काम कोई कर रहा है. ठीक है, that's honestly that was my thing. And then I was like, अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने कहा तो बस सब AKC तो करना ही करना है. I think I'm one of the very first ones to take my money. So you joined the AKC course, right? Yeah. तो AKC में आने के बाद, इससे पहले कि हम आगे चलें कि how you progress through your journey, how was your experience with the AKC in the beginning? जैसे आप आई, you just came to know about copywriting, तो AKC में आके कैसा लगा आपको?
मैं तो बहुत आई रिमेम्बर, आई थिंक तुम्हें भी याद ही होगा डेफिनेटली, कि जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर आवाज नहीं आ रही थी, रिमेम्बर? The internet had an issue and I was like, हाँ, यार ये क्या सीन हो गया, मतलब you know you ended up paying और पता नहीं क्लास हो रही है नहीं हो रही है, ये क्या सीन है. But anyways then we did a class next day obviously and I was like अच्छा मेरी ठीक. दुख की रग पे हाथ रख दिया. I still get nightmares about that. अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता, my very first batch, my very first class, everyone was super excited, including myself. And we finally start our first class, and my internet is not working. For 1 hour, students keep on waiting. Like 30 students, 28, 30 people are waiting for me. This is my very first time as a teacher. और मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, and we actually had to postpone that class. A very painful experience, a nightmare to be honest. And Yeah, so alhamdulillah, I was like, hasn't I was happened like ever since. हाँ, I was like ये लो भाई गए पैसे, you know. तो उस नाइट मेरिश एक्सपीरियंस के बाद जो पहली क्लास हमारी पूरी हुई, उसके बाद हाउ डिड आई रिकवर, यू नो, एंड हाउ डिड यू फील थ्रू आउट द हाँ नहीं, नेक्स्ट के बाद आई लाइक कि यू वर वेरी यू नो वेरी अप्रोचेबल एंड डिड नॉट हैड दैट गुरु वाला हिसाब किताब, यू नो, कि बस मैं हूँ वो मेरी बात सुने एंड माय वे एंड हाईवे वाला सीन. तो आई कांट हियर यू. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग, दैट्स व्हाई यू Yes. कांट. हाँ, okay, okay. ये I'm listening. फेसबुक नीचे देखना पड़ रहा है ना मुझे, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको हटा देती हूँ बिल्कुल. सो मुझे ये था कि जो है कि यू वर वेरी अप्रोचेबल, इट वाज वेरी रिलेटेबल इन अ सेंस. बहुत मुश्किल नहीं थी कोई चीज़ समझने में, तो फ्रॉम द गेट गो आई कुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, इस तरह होना है, इस तरह होना है, इस तरह होना है. एंड बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर हुए थे. एंड आई थिंक AKC वाज अ वेरी टाइट नेट कम्युनिटी. And that is one thing I really like about it. कि सब everybody wants to help everybody. ठीक है, nobody is like to egg somebody down कि भाई नहीं जो मैं बोलना बस यही सही है, ये वाला सीन नहीं है. So that is किसी की something अपनी I राय है. So we are like a family there. We are like a proper yeah. family. This is a good tight knit community. So let's move on. So you joined the AKC program and then you went through the classes and all that. So how did you master the skills so quickly and started writing all types of copy in no time? Because I realized that you were still in the middle of the program when you started writing copy. या शायद उसके end पे जाके you started writing. So how did you master it so quickly? And you know, after a few months, I think, couple of months, you were writing all types of copy very, जिसे कहते हैं ना, easily, and you were working with me as well as a part of my team, and I can directly relate with your writing and everything. So how did you do that? How did you do that so quickly? Yeah, as far as master की बात रहती है तो I think I'm one of those people who is never afraid to try. ठीक है. That is one thing जो मुझे आजकल जो newbie writers भी होते हैं, मैं कौन सा खुद बहुत पुरानी हूँ, लेकिन the reluctance to get started, ठीक है, to just write something, वो बड़ी बहुत ज्यादा होती है. और तो आई थिंक मैंने कहा तो क्या होगा, ज्यादा रिजेक्ट हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, पैसे वापस मांग लेगा, क्या कर लेगा, राइट? what can the person do? He cannot like hunt me down and come to my house and ask for money. So Exactly. I think I was never afraid in that kind. और फिर मैंने from the get go you know, I started experimenting with you remember when I said I used to hate email copywriting, right? And Yeah. then I ended up doing such a huge project of emails. Remember the 51 emails we did? So I think I would always say I was never afraid to try things. And that was one point in the sense that I did a lot of practice. Practice क्या मतलब I had to write. ठीक है, मुझे काम ही करना था. तो उस तरीके से फिर मुझे काफी जल्दी चीजें समझ में आना शुरू हो गई. अच्छा ठीक है, you know, रिसर्च इस तरह होती है, पेन पॉइंट इस तरह निकालते हैं. This is how you structure a copy. This is how you close a copy. I think practice, you know, constantly keeping on doing things. So guys, this is the thing. If you guys are listening carefully, you can see that practice is what makes perfect. लोगों को लगता है कि यार कॉपीराइटिंग जो है वो पहले पता नहीं हम पूरा का पूरा कोई हमें पकड़ के हमारे दिमाग में डाल दे सब कुछ. Anam was part of the AKC program. Very many other students are part of the AKC program. But AKC program भी कोई आपका दिमाग खोल के उसके अंदर कॉपी डाल नहीं देता है. You learn the process, you learn the structure, you learn it step by step, but eventually you have to do it yourself. जब तक आप करना नहीं शुरू करते, प्रैक्टिस नहीं करना शुरू करते, आप नहीं कर पाएंगे. इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, ओके, इट्स साइंस एंड आर्ट बोथ. क्रिएटिविटी भी है, साइंस भी है.
You have to practice. जितना practice करेंगे उतने अच्छे होते चले जाएंगे. गाने लगा के मैं गाने लगा के करता हूँ. गाने लगा लो जैसे मैथमेटिक्स करते हो वैसे कॉपी लिखा करो. Same. I have a Spotify पे मेरी playlist बनी हुई है. I was like, किस तरह काम हो रहा है भाई, ऐसे ही काम हो रहा है. I'm into vocal trances, and trust me, people are like, यार vocal trance के साथ you do copy how? Doesn't it like Vocal trance, conflicts with your thinking process? I am into like freaking K-pop. ठीक है, so I'm like listening to Korean stuff and writing English stuff. It's a complete 180. But okay, so let's move on. So how long have you been doing copy full time? What would you say? Full time कितना अरसा हो गया आपको करते हुए? Roughly 6 months. 6 months. So it's just been 6 months that you got full time into copy. इससे पहले आप content writing कर रही थी, but it's just been 6 months that you got into copy. And in 6 months, what do you think helped you the most in scaling to 400,000 Pakistani rupees in such a short amount of time? $2,500 के around. मुझे पता है कि last screenshot था आपका. $2,500 4 लाख से ऊपर. हाँ, इसके बारे में कहूँगी. I think I was not afraid to pitch for projects. Buyer request में भी जाके मुझे लगता था कोई project इस तरीके से है that interests me and I would quote. Buyer request के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ $5 की quotation होती है. अगर वो $5 की quotation भी है तो it's not necessary कि आप $5 quote करें. ठीक है, this is one thing. So a lot of people don't understand. But उसके अलावा I think I stuck to my guns. I stuck to my guns in a sense कि I had these deal breakers in my mind कि भाई इतनी कॉपी है तो इतना रेट होना चाहिए या मतलब इतनी expected payout होनी चाहिए. So I didn't get very lowballed into a lot of small projects in a sense. Like I wasn't stuck in things I did not want to do. Right? So that was one thing. And as far as scaling वाली बात है, a lot of struggle is always to get Fiverr started. ठीक है, मेरे स्टार्टिंग के आई थिंक फर्स्ट 2 months डेफिनेटली बहुत पेनफुल रहे थे क्योंकि मेरी गिग नहीं चल पा रही थी एंड आई वाज लाइक यार ये क्या सीन है. बट इवेंचुअली आई डिड ऑल्टर माय गिग्स आई थिंक ट्वाइस एंड मुझे ये भी नहीं अंदाजा था कि ऑल्दो आई हैव बीन ऑन फाइवर फॉर अ व्हाइल नाउ, मुझे ये भी नहीं पता था कि बायर रिक्वेस्ट के अलावा भी डायरेक्ट काम आ सकता है. ठीक है, मेरे दिमाग में था कि until unless you don't pitch for stuff you don't get it. बट ऐसा नहीं था क्योंकि ये मैंने AKC से सीखा था definitely. And one thing I really like about you, Anam, I am always the kind of person who preaches कि यार Fiverr हो, Upwork हो, जो भी platform हो, try different things, try stuff. डर के नहीं बैठो कि यार ये change कर दिया तो यूं हो जाएगा, इसको edit कर दिया तो profile T rank हो जाएगी. I'm all about testing, experimenting, and you do that so effectively. बल्कि आप मुझे pitch कर रही होती हो जो आपने recent sales funnel वाला incredible idea. We have like 60 people live right now with us. Guys, अगर आप लोगों को अभी तक मजा आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसी की तरफ चलते हैं कि अनम ने मुझे एक आइडिया रिसेंटली पिच किया है एंड शी डज दैट सो वेल कि वो एक्सपेरिमेंट करती हैं एंड देन शी गेट्स बिग विंस एंड देन शी कम्स बैक एंड शेयर्स देम विद मी. और मैं इवन इनसे आइडियाज ले रहा होता हूँ कि यार आई एम गोना डू दैट. ठीक है, और कभी कभी आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग और वो मेरे से पहले इंप्लीमेंट कर लेती हैं. दैट्स हाउ फास्ट शी इज. सो आर यू गाइज एंजॉयिंग? आर यू गाइज हैविंग अ ग्रेट टाइम? If you are, please let me know in the comments. थोड़ी सी hype हो, थोड़ा सा पता चले that you guys are here. We have 60 people live right now. So show me that you guys are here. So you had a big win, Anam. इससे पहले कि मैं अगला question लूं, did you get removed from the stream somehow? Wait. Okay. Back. Okay, you're back. Yeah, right. So, acha. You remember, Anam? I think you won a project where you were charging $250 or $300 for a landing page, right? 500 words-ish ka landing page tha. I think you got that project from Cult or somewhere. So that's what I'm talking about. How did you get that? How do you do that? Like you get such massive projects. Even as a beginner, like 6 months is not too much. Yeah, 6 months is a beginner copywriter. मेरे हिसाब से. वही वाली बात, बेइज्जती होना, you're not afraid of it. And I think once you become a parent, you get really used to that kind of stuff. Constant बेइज्जती होना, you're like, oh whatever, this is normal. So I was like, ज़्यादा क्या होगा, right?
what would these people do? तो जब भी कल्ट पे आती थी कोई ना कोई जॉब इन सब, I would constantly pitch. ठीक है, मैं तो इतना pitch करती हूँ कि I have a sticky note on my desktop. ठीक है, वो जो sticky notes होते हैं ना, वो digital sticky notes basically. मैं उसमें मेरा एक pitch बना हुआ साइड में पड़ा रहता है. And whenever I see something, oh, this is interesting, I just pick it. मतलब that's why pitch को थोड़ा alter करना पड़ता है depending on the project. But I would constantly pitch. और उससे बहुत ये भी हुआ कि आई द कल्टर्स वाला ग्रुप एंड जितने भी नथिंग हेल्ड बैक समथिंग ऐसे और भी 2-3 ग्रुप्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि इवन इफ दीज पीपल डोंट हायर यू गेट ऑन देयर रेडार, एंड व्हेन यू गेट ऑन देयर रेडार दे समटाइम्स इवन कम बैक टू शेयर किसी और की जॉब विद यू. एंड दिस इज हाउ आई फाउंड दैट वो ESI वाला जो लैंडिंग पेज मैंने किया था वो किसी और के रेफरेंस आया था वो बंदा, राइट. उसको मैंने आई थिंक मैंने उसको दिसंबर में कभी पिच किया था, एंड यू नो these guys actually see it and they ignore it. They अच्छा ठीक है fine नहीं hire हुए whatever ठीक है, but in February या January के end में he ended up hiring me, and he just straight away came and he was like अच्छा ठीक. So you have to put yourself out there, like that's the whole point. You have to put yourself out there. You know, लोग शाय होके बैठ जाते हैं. They're like यार अब क्या करें, कहाँ से क्लाइंट आएगा, कब आएगा, आ जाए. No, you have to go on the offensive. You have to go on the aggressive. You can't just sit back and wait for a client to come. You have to put yourself out there. In the very desi element, थोड़ा तप्पड़ दिखाना पड़ता है. You know, you have to be a little stronger. यार market is competitive, okay? ऐसे नहीं है कि clients ने गोद में खुद आ जाने. You have to hunt them. और मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे यही है कि what are your client hunting methods currently? Which platform is moving the needle the most for you? Client hunting methods, अच्छा ठीक है. Client hunting methods में नंबर 1 तो यही कि डायरेक्ट क्लाइंट्स हंट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें. जितने 1 सेकंड जी यस जस्ट यूज अ प्लेट, सॉरी ये होना था कि हाँ. तो नंबर 1 यही कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर डायरेक्ट क्लाइंट्स, जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, रेडिट पे बहुत सारी इस किस्म की जॉब्स आती हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स एज वेल, freelancewritinggigs.com, और यू वुड इवन बी सरप्राइज्ड टू फाइंड ट्विटर पे इस किस्म की थ्रेड्स जहाँ पे लोग जो है ना पोस्ट कर रहे होते हैं. तो मेक इट एन एजेंडा ऑफ पिचिंग. ठीक है, बस ये वाली बात कि क्लाइंट आ जाएगा, क्लाइंट हम ढूंढ लेंगे, हमें यू नो दैट इज जस्ट रॉन्ग इन द सेंस कि आप लेजी हो जाते हैं उस मामले में. No, I mean, you are now making 2.5K around dollars per month, alhamdulillah. What is your platform that moves the needle for you? What is your client hunting method? जिस पे आप सबसे ज़्यादा, is it Fiverr, is it direct clients, is it a combination? It's a combination in a sense that it's 2/3 Fiverr and it's 1/3 direct clients. Right. So Fiverr is a platform that can make you rich. There is no doubt about that. If you know how to get started the right way, Fiverr can make you rich. Fiverr is making people rich, guys. Keep like सुन लो, खुदा के वास्ते सुन लो, ठीक है. और अगर कॉपी not that वो $5 वाला प्लेटफॉर्म है नहीं. अच्छा, मैं एक पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ अनम, एंड आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है. वो ये वही बात है कि चिकन केम फर्स्ट और द एग. व्हाट डू यू थिंक? पहले बहुत अच्छी तरह लर्निंग कर लो, उसके बाद कहीं जाके पिचिंग स्टार्ट करो, या पिचिंग साथ साथ करना शुरू कर दो और प्रैक्टिस करके सीख जाओगे, या पहले परफेक्ट हो जाओ फिर जाके क्लाइंट लेने की कोशिश करो? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज अ पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन. व्हाट शुड यू डू, और इज देयर अ बैलेंस बिटवीन टू? Personally speaking, and from what I know, learning is a lifelong process. Excellent. If you will keep on thinking कि मैं इतना सीख लूँगा, मैं इतना सीख लूँगी तो उसके बाद मैं करूँगी, dude, life is constantly changing. ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे कल को क्या होना है, तो why not now, right? Seize the moment. वही जो कार्पे डियम वाली कहानी, मैं तो जब जैसे मैं सीखा था मुझे तो फौरन ही चल शुरू हो गई थी. मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसको लिख के देखते हैं, इसको लिख के देते हैं, अच्छा ठीक है. एंड आई थिंक I started my journey midway in the course. Like I started working with you halfway through the course, and उसी में मैंने Fiverr बना लिया. तो फिर उस वक्त मेरे Upwork भी. And I remember आपने सिर्फ एक पोस्ट लगाई थी हमारे AKC का जो स्टूडेंट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप. आई रिमेंबर कोई पोस्ट लगी हुई थी, उसमें आई सॉ योर कमेंट. एक्चुअली यू वर लाइक के
I am learning a lot from AKC or something कि मुझे basics तो समझ आ रही हैं. All I want to do now is to like get a hands-on experience on a project. And it was like a paragraph long thing. And I instantly realized that yeah, this person is writing very freely. And like I can actually recognize someone when they are writing good. So I instantly approached you and I was like, let's do a project, you know. So वहाँ से then I came to know that you have been writing for a while. So I was like, let's test her. You know, you were regular as well in the classes and all that. So you were active learner. And that's how you started working with me. And then अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने अपना इतना ज्यादा स्केल कर लिया है कि मुझे लगता है बहुत जल्द मुझे पीछे छोड़ने वाली हो. एंड यू आर नॉट कमिंग स्लो, यू आर नॉट कमिंग स्लो. मुझे लग रहा है लाइक आई एम श्योर कुछ अरसे बाद मुझे पीछे छोड़ रही हो आप. एंड इट वुड मेक मी रियली हैप्पी टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, आगे चलते हैं. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, बल्कि नहीं इसको हाइड करते हैं. ये जो लोग आराम से बैठे हुए हैं, किसी ने चाय लगाई हुई होगी, किसी ने बिस्किट लगाए हुए होंगे, जरा अपने हाथ हिलाएं और कमेंट में बताएं कि आपको अभी तक कैसा लग रहा है. क्योंकि अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो लिटरली यही है कि हाउ शी मैनेजेस कॉपी अलोंग विद हर फैमिली एंड किड्स. सो इफ यू गाइस आर रेडी फॉर दैट, कमेंट सेक्शन में बताएं यार. थोड़ी सी हाइप क्रिएट करें, पता चले कि आप लोग यहाँ पे हैं और अनम को भी पता चले दैट यू गाइस आर हियर टू गेट सम वैल्यू फ्रॉम हर. कमेंट कीजिए. देन वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बताइए आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज मुझे खुद तो बहुत अच्छा लग रहा है. इट वाज अ लॉन्ग ड्यू इंटरव्यू एक्चुअली. आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो sitting next to Anam and having a great discussion just like we are doing right now. So literally chai with peanut pick here. हाय मुझे भूख लग रही है. मैंने भी खोल लिया साइड पे कमेंट्स. अच्छा जी, जी आ रहे हैं कमेंट्स. वी हैव 65 पीपल लाइव राइट नाउ हमारे साथ माशाल्लाह. So मैंने पहले ही कहा था कि ये वाला जो इंटरव्यू होगा ये थोड़ा probably नॉन ट्रेडिशनल होगा, क्योंकि I think हम दोनों की रिलेशनशिप थोड़ी इस किस्म की है क्योंकि I think we are more friends now, so we are definitely more of friends now और बड़ा अच्छा हमारा आपस में relationship and it's a long relationship now, so it is fun and that's why I was really looking forward to this interview. Moving on, our next question is जी, how do you manage your kids and family प्लस कॉपी प्रोजेक्ट सो स्मूथली एंड एफिशिएंटली कि आप अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे डिलीवर कर रही होती हैं. मुझे भी कर रही होती थी व्हेन यू वर वर्किंग विद मी एंड नाउ यू आर डिलीवरिंग टू योर क्लाइंट्स एवरी डे 3 4 5 प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं. एंड यू आर सोलो कॉपीराइटर राइट नाउ. आई नो दैट फॉर अ फैक्ट दैट यू आर स्टिल अ सोलो कॉपीराइटर. यू आर अर्निंग ऑल दिस मनी अलोन. आपकी कोई टीम नहीं है. हाउ डू यू डू दैट? And the stage is yours actually. This is an important one. The thing with kids is that you need to compartmentalize. I think I'm one of those mom. मैं अपने बच्चों को अपने सर पे सवार नहीं करके रखती, ठीक है? ना ही मेरे बच्चे मेरे सर पे सवार होते, ठीक है? We are very independent in that sense कि वो अभी भी they're playing outside, they're eating their food, उनके पास सारी चीजें, they have their toys, they're pretty मतलब chill. Although मतलब my girl is 7 years old almost and my boy is like 3 years old, but in a sense कि when it comes to copywriting with a family, like आप अपनी family responsibilities देखनी है, तो find a balance, ठीक है? Find a balance in a sense कि दोनों चीजों में से कोई भी compromise ना हो, ठीक है? I know कि when my kids need me in essential, like मतलब सुबह उठेंगे, I know कि अच्छा ठीक है भाई, you know, once they are done, they have to get their breakfast done, they have to go to school. तो वो जो शुरू का चंक होता है सुबह का, I know कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, right? तो मतलब उसमें मेरा टाइम होता है कि भाई ये तो करना ही करना है. And my kids leave for school, then I get some time to myself. ठीक है, इसके अंदर मैंने emails check कर ली, pitches कर ली, अच्छा कौन सा project जाना है, which one is important right now. मेरे deliverables की timeline usually 3 to 4 days होती है, and sometimes I even do you use some sort of project management tool as well जिस पे आप note down कर रही होती हो daily का schedule, या how do you do that? I think I am very dependent on Google Calendar. मैं Google Calendar होते हैं, मैं काफी reminders अपने phone में लगा के रखती हूँ चीजों के. And you know even Fiverr reminds you जब 12 घंटे रह जाते हैं आपके project में, although तब उसकी नौबत नहीं आई अब तक, but it's one of, अगर आप notifications on करें you can use that. As far as बात रही family को manage करने की stuff, हम वही वाली बात है. A lot of mothers and a lot of women, I'm not going to say mothers, जो कि family है या house है, yes your house is your priority, but itself you are also a person,
ठीक है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि my kids are an extension of me. ठीक है. I am not an extension of my kids. What a beautiful thing to say. ठीक है. That means कि I have to, for me to be a very responsible mother, a mother who's at peace with herself, I have to be productive. ठीक है. मैं नहीं कर सकती. क्योंकि if I am not productive, I get, मेरा mental peace बड़ा disturb होता है. ठीक है. And this is a very important point, Anam. लोग कहते हैं कि यार हम दुनिया को संवारने निकलेंगे, दुनिया को संवारेंगे, बच्चों को, फैमिली को. Unless you get mental peace yourself first, unless you feel better yourself first, आप दूसरों को कैसे लेके चलेंगे साथ? So you have to be healthy yourself first, both mentally and both physically. And work is, for instance, copy is your passion now, I can tell. So you have to follow your passion as well. जितना आप passion को follow कर रहे होंगे, and then you're making really good money, which makes you feel good again, and then you get tons of incredible reviews from clients. It again gives you another rush of adrenaline. I know all those feelings every single day. I get that. तो client का review जो होता है ना, वो जो Fiverr पे आई या जहाँ भी, when you click that button and when you're like anticipating what he said, and then and when you get that 5-star, you read it. और मेरे साथ ये होता है कि whenever I get a 5-star review, even to this day, when I get a 5-star review for everyone, मैं क्या करता हूँ, वो 5-star review लेने के बाद जब मुझे मिल जाता है, मैं वही कॉपी जो मैंने क्लाइंट को भेजी होती है, फनी थिंग, मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ. और मैं कभी-कभी 2-2 दफा पढ़ लेता हूँ कि यार ये मैंने की थी, तो अब क्लाइंट ने पढ़ के 5-star दिया, तो मैंने ऐसा क्या लिखा था, you know. So I read it twice. So coming back to Anam, it was a funny story I wanted to share. So that's true. You need to be mentally at peace yourself before you can manage anything else. So moving on, I think everyone got that point really clearly कि आप कैसे करती हैं. What is your favorite type of copy and why? It's important. I think there are so many types of copy. So what do you think? And you write all types of copy. So what do you think is your favorite, if you had to pick one? I think my favorite has to be landing pages, sales page landing pages. I like those. Sales page. They also come very naturally to me. तो मजा आता है मुझे. Emails I still don't really like. But I have to do them अगर मुझे मिल जाते हैं. अच्छा guys, आगे चलने से पहले एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, वो लोग जिनको नहीं पता, Anam is going to show us an excellent piece of website copy जो इन्होंने लिखी है at the end of the interview. It was highly praised by the client और मैंने खुद भी पढ़ी है and I absolutely love that copy. So if you guys stay till the very end, we are going to have a live copy ब्रेक डाउन तो नहीं कहूंगा, कॉपी नरेटिंग सेशन, या आप लोगों को कॉपी दिखाई जाएगी अनम की, जिसको अनम नरेट करेंगी. सो आई थिंक इट विल बी वैल्यूएबल फॉर यू गाइस. सो अनम सेज दैट शी लव्स लैंडिंग पेजेस एंड सेल्स पेजेस द मोस्ट. सो लेट्स मूव ऑन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर प्रोसेस लाइक व्हेन सिटिंग डाउन फॉर एवरी पीस ऑफ कॉपी? एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर बंदे का अपना एक प्रोसेस होता है, स्पेशली यू विद ऑल दोस डिस्ट्रैक्शंस एंड एवरीथिंग. What is your process when you're like sitting down for every piece of copy? How do you do that? How do you get it? General process is कि जब मुझे Fiverr पे मैं इस तरीके से समझाऊंगी. जब मेरे Fiverr पे कोई प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, एंड मेरी रिक्वायरमेंट्स फिल होती हैं, तो मैं I first go through the requirements. ठीक है, मैं उनको तसल्ली से 2 मरतबा तो एटलीस्ट पढ़ती हूँ. मुझे उसमें कुछ लगता है कुछ मिसिंग है, तो मैं उसी वक्त ही क्लाइंट को बोलती हूँ. Like within 10 minutes of getting a project, मेरी कोशिश यही होती है कि समटाइम्स जैसे अगर कोई ऐसे कोर्स का कोई लैंडिंग पेज है, तो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है. लाइक दे एंड अप गेटिंग मॉड्यूल्स कोर्स में है या नहीं है, कुछ इस किस्म के सवाल के कोर्स लाइव है या नहीं है. दिस इज जस्ट अ आइडिया, बट कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं जो कि आपको सेल्स कॉपी लिखने के लिए चाहिए होती हैं और क्लाइंट ने मेंशन नहीं की होती. क्योंकि इन द सेंस कि आपका रिक्वायरमेंट जो फाइवर में जो व्हेनेवर यू आस्क क्वेश्चंस, वो वेग तो नहीं होते, लेकिन बड़े जनरल एंड ब्रॉड होते हैं. कितने क्वेश्चंस आप पूछती हो? वही वाले पूछती हो जो मैंने बताए हुए हैं किसी प्रोग्राम में, या आपने, मैंने तो खैर 13 बताए थे, लेकिन मैं रेकमेंड 5 से 6 करता हूं, तो आप कितने पूछती हो? आई थिंक मेरे 5 से 6 ही हैं. और उस पे अगर फिर मैं देखती हूँ कि प्रोडक्ट किस किस्म की है और मुझे इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए. यूजुअली जो कोर्सेज वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, तो फिर वो मैं अलग से आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई सेंड. एक ये काम होता है. दूसरा कि जब प्रोजेक्ट आ जाता है, तो प्रोजेक्ट देखने के बाद आई डोंट अटेम्प्ट द प्रोजेक्ट इमीडिएटली. ठीक है, दिस इज माय थिंग. आई वुड लीव इट असाइड एंड आई वुड लाइक, अच्छा ये लेट्स टेक अ आइडिया, राइट. अगर ये प्रोजेक्ट जो किसी सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर है, ठीक है, तो देन मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है, एंड देन आई कम बैक. आई वुड
जनरली गूगल के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोडक्ट इस किस्म के जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी वेबसाइट्स देखी, थोड़ा सा रीड किया इन सब चीज़ों के बारे में. आई एम अ वेरी फरोशियस रीडर, तो मुझे समटाइम्स आई गो डाउन द रैबिट होल भी. मतलब बड़ा मजा आता है रिसर्च करने में. अच्छा ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है. सो it's very addicting, you know, to find so much. अच्छा, एक बात मैडम यहाँ जरूर पूछूंगा. आर यू इंटिमिडेटेड बाय एनी नीश, या कोई भी नीश का काम आ जाए, यू लव डूइंग रिसर्च एंड यू आर लाइक यार आई एम गोना लर्न अबाउट दिस नीश, नो प्रॉब्लम, या यू आर लाइक नहीं यार ये नीश मुझे मजा नहीं आना, मैं छोड़ रही हूँ, मैंने नहीं करना ये काम, आई डोंट वांट टू डू द रिसर्च ऑन दिस नीश. Sometimes some niches are hard in a sense कि जैसे वो credit repair type की चीजें आती हैं, but I am always I love that. I love that. Financial niches जो है a bit difficult, but since जैसे बहुत सारे लोग technology and crypto से भी भागते हैं, right? स्टार्ट में क्या कहोगी, people should give up on the niches जो उनको मुश्किल लगती हैं या नहीं? No, they shouldn't. And आपका horizon किस तरह बढ़ेगा अगर आप no कहते रहेंगे? This guys, listen, गौर से जरा सुनेंगे तो बहुत ये ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल बातें हैं. व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट और आपके पास क्लाइंट आता है, जिस दुनिया की नीश का भी क्लाइंट आ जाना, इफ यू नो हाउ टू डू रिसर्च प्रॉपर्ली, इफ यू नो हाउ टू राइट कॉपी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पता होता है और मैं इसीलिए इनको यही पहले दिन से बताता हूँ कि कोई भी नीश नहीं छोड़नी. हाँ, कोई बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, आपको लगता है कि यार मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी और आपको गंदा रिव्यू मिल जाएगा, दैट इज वन थिंग. मेहनत से जान नहीं छुड़वानी. अनम ने कभी जान नहीं छुड़वाई मेहनत से. आई नो कि अनम को इतनी भी मुश्किल नीश का काम मिल जाए, शी इज जस्ट गोना डू इट आउट ऑफ नोवेयर, शी इज गोइंग टू डू इट, चाहे वो जिंदगी में पहली दफा भी कर रही हो. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट में प्रोजेक्ट छोड़ते जाओगे तो हाउ विल यू ग्रो? हाँ, एक स्टेज पे जाके आप छोड़. अनम इस स्टेज पे आई नो फॉर अ फैक्ट कि अब अनम इस पॉइंट पे काफी प्रोजेक्ट छोड़ती भी हैं. स्टार्ट में नहीं छोड़ती थी. मैं अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में छोड़ देता हूँ. मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ यार, इट्स फाइन, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे कंसिस्टेंटली काम मिलने, क्लाइंट्स मिलने. स्टार्ट में आई डिडंट यूज्ड टू डू दैट. Very important question, Anam. I actually want to know. This is for me as well. How do you? I just want to add on the पुराना वाला question a bit, process वाली बात पे. हाँ, process वाला. हाँ, तो उसमें I would say कि जब once I वही वाली बात मैंने once I see competitors जो हैं वो क्या कर रहे हैं, I think competitors को कभी भी under value नहीं करना चाहिए. कि हम लोग बहुत सारे लोग नहीं करते हैं क्योंकि when you see the competitors doing that thing, फिर आपको होता है कि अच्छा ठीक है मार्केट में exactly बात हो क्या रही है इस प्रोडक्ट से. तो it's very good कि आप 4-5 competitors ढूंढें. भले उस बंदा बंदी जो भी क्लाइंट आपको जो भी दे रहे हैं वो अक्सर competitors में एक दो चीज बता देते हैं. मैं तो 6-6 7-7 competitors निकालती हूँ उस नीश के. जबरदस्त. कंपेटिटर से बहुत आइडिया हो जाता है. बिल्कुल. हाँ, और मैं देखती हूँ कि कर क्या रहे हैं. उसके बाद ये वाला पोर्शन हो गया, देन आई कीप दिस असाइड अगेन. ठीक है, देन क्योंकि सिंस मेरी लाइफ में केओस बहुत है तो मेरे लिए चीजें साइड करना मुश्किल नहीं होता कि आई हैव टू गो पिक द किड्स, वो होता है तो मतलब यू नो. देन आई कम बैक टू इट एंड देन आई अप्रोच इट फ्रॉम एन एंगल कि इफ आई एम अ कस्टमर, ठीक है, व्हाट इज दैट आई वांट टू नो अबाउट दिस थिंग. विल दिस थिंग हेल्प मी? हाउ कैन आई फाइंड दिस थिंग? इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर बेनिफिट्स हैं तो कैच क्या है? इसकी प्राइस क्या है? इज इट अफोर्डेबल? मतलब any question that comes to your mind as a customer, okay? And that is something that really helps you hone in the sales page. क्योंकि sales page सिर्फ इसलिए नहीं लिखा जाता है कि आप चीज बेच रहे हैं. sales page इसलिए भी लिखा जाता है कि आपको कस्टमर से पैसे निकलवाना है, ठीक है, आपको कन्वर्जन करवानी है, क्रेडिट कार्ड निकलवाना है उनका. एग्जैक्टली. तो until unless you really do not dig into the customer psyche कि वो क्या क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्या सवाल है, और बहुत सारी चीजों के जवाब आपको आपका क्लाइंट भी नहीं बता पाता है. ठीक है, अगर इस चीज का फायदा है तो क्या है. अभी रिसेंटली आई डिड अ प्रोजेक्ट फॉर दिस सप्लीमेंट्री कंपनी. दे व्हाट दे डू इज दे मेक पैचेस, ठीक है, एंड देन यू जस्ट स्टिक द पैच टू योरसेल्फ एंड इट्स बेस्ड ऑन. अब मैं उससे पूछूं कि हाउ डज द पैच वर्क, एंड बंदे का रहा थी कोई लाइट टेक्नोलॉजी है. मैं कहता लाइट टेक्नोलॉजी पीछे क्या है, तो वो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि it was an affiliate product. So I was like, अच्छा ठीक. Then I went and I digged in पीछे कि अच्छा भाई light technology होती क्या है, how does it work, and then I ended up writing वो तकरीबन 2000 words का sales page था, and it was highly convincing by the end. इधर मैं आता हूँ, जो आपने एक बड़ा important point यहाँ पे बताया, that you have to put yourself into the shoes of your customers. Incredible point.
गाइस अगर आप लोगों को इस पॉइंट से वैल्यू मिली है जरा कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसी पॉइंट को एक्सटेंड करके अनम से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने लगा। मुझे लगता था हम क्वेश्चंस जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेंगे, बट क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकल रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है और बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस निकल रहे हैं। सो अपने व्यूअर्स की खातिर ही, हालांकि ये एक तरह की सीक्रेट होती है, हाउ डू यू एक्चुअली पुट योरसेल्फ इनटू कस्टमर्स यूज? कौन से रिसोर्सेज क्या करती हो रिसर्च के दौरान के यू आर एबल टू फाइंड आउट हाउ योर कस्टमर्स आर थिंकिंग, या like you know how do you put yourself into their shoes? What do you do online to find out that? first thing, common sense. ठीक है, if I am buying something, मेरा common sense क्या कहता है इस चीज के बारे में? ठीक है, आप खुद अपने आप को देख लें. If you are buying a glass, is it plastic? Is it washable? Is it microwavable? How much water does it hold? How much will it cost? ठीक है, is it portable? Can I keep it in my car? मतलब 10,000 सवाल निकल सकते हैं सिर्फ इस glass. Exactly. ठीक है, तो this is common sense. उसके बाद I would rather I love Reddit. ठीक है, Reddit and Quora are my like go-tos. Reddit and Quora, yeah. Guys, notes बना लें साथ साथ. ये चीजें बार-बार नहीं आनी. Reddit and Quora. Yeah, I would end up on Reddit and I was like, अच्छा ठीक है, who uses this glass? इस glass के reviews क्या हैं? इस glass की complaints क्या हैं? ठीक है, लोग क्या बात करते हैं? So you would go on Amazon as well, ना, for the reviews. Amazon पे भी जाओगी. For some products where you could. मतलब जितनी भी ऑनलाइन रेटेड टू दिस प्रोडक्ट होगी, और समटाइम्स ये भी होता है कि रेडिट एंड कोरा आई रियली लाइक बिकॉज समटाइम्स पीपल आस्क दीस क्वेश्चंस जो कि बड़े पर्टिकुलर होते हैं. ठीक है, मे बी समबडी आस्क कि अच्छा ठीक है, ये ग्लास जिस प्लास्टिक का बना हुआ है, हाउ व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई डोंट नो, मतलब उनकी मतलब वो बहुत ही एंड जाते हैं, आपका दिमाग में वहां तक नहीं जाता. तो इट रियली हेल्प्स यू जस्ट फिगर आउट पूरी एक मतलब एक माइंड मैप बन जाता है आपका कि अच्छा ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के बारे में है. हमारे लोग So how much would you rate research into research and writing? Like how much percentage you think one should give to research when it comes to time, and how much time to spend when writing? What do you think? Yeah, writing personally for me, writing comes very naturally. I don't want to मतलब ये माशाल्लाह for everything, but मैं जो हूँ I generally research more, like research in the sense कि जल्दी चीजें पढ़ ली हैं, and I'm an avid reader, तो मुझे इतना मसला नहीं होता चीजें पढ़ने में, क्योंकि वो जो क्विक स्कैनिंग होती है ना, उसे कहते हैं अच्छा ये हुआ इसे करके देख लिया, then I end up writing. I think तभी the fact कि how come you are such a fast copy churner वाली बात आती है. Yeah. हाँ, वो मेरा अगला पॉइंट है, जरा उसी की तरफ आगे आप बढ़ते हैं थोड़ा सा. पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इसके बाद हम फास्ट कॉपी की तरफ चलते हैं. व्हाट्स योर सीक्रेट? हाउ डू यू गेट इनटू द क्रिएटिव फ्लो विद ऑल द डिस्ट्रैक्शंस? बिकॉज़ आई नो फॉर अ फैक्ट कि when you have to get into the creative flow, because there is it is a process. Like मैं बैठता हूँ फॉर इंस्टेंस कॉपी लिखने, it takes a bit of time. It like कुछ कोर्स होते हैं, like there are like, जिसे क्या कहूँगा मैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो करने पड़ते हैं, उसके बाद यू फाइनली गेट इनटू. लाइक मेरे केस में आई हैव टू प्ले द वोकल ट्रांसेस इन द बैकग्राउंड, देन आई हैव टू लाइक ओपन अप सम टैब्स जिन पे मैंने रिसर्च करनी है, देन आई स्टार्ट डूइंग द रिसर्च, और आहिस्ता आहिस्ता आई गेट इनटू दैट. लाइक सारी डिस्ट्रैक्शंस मेरे माइंड से, और मेरे माइंड में इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, माइंड यू. अनम के केस में रियल डिस्ट्रैक्शंस हैं बहुत सारी. सो दैट इज माय क्वेश्चन कि हाउ डू यू गेट इनटू द क्रिएटिव फ्लो विद ऑल द डिस्ट्रैक्शंस? लाइक हाउ डज इट लुक लाइक फॉर यू? अच्छा, क्रिएटिव फ्लो विद ऑल डिस्ट्रैक्शंस. अच्छा, विद मी मेरा जो लैपटॉप है वो हर वक्त खुला रहता है. ठीक है, वो कभी टेबल पे रखा है बेचारा, कभी स्टैंड पे रखा हुआ है. इट्स ऑलवेज ओपन, आई ऑलवेज हैव अ पेज ओपन. सो व्हाटएवर आइडिया आई गेट इनटू माय हेड रिलेटेड, वही वाली बात है ना, व्हेन यू आर इनटू कॉपी, अगर आप बड़ी अनहेल्दी कॉपी राइटर है, सो यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कॉपी. ठीक है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कॉपी. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. मुझे रात को सोते हुए ख्वाब आते हैं, सोते हुए, और मैं लिटरली नो किडिंग दिस इज द नोट, मैं इसका पेन निकालता हूँ और मैं ऑफ स्क्रीन के ऊपर नोट ले लेता, कहाँ पे है नोट लेके, और एज इट इज बंद कर देता हूँ ताकि मेरी आंख भी ना खुले. That is what I do. रात को सोते हुए आइडियाज आते हैं. So yeah, I can 100% relate with that as a copywriter. Yeah, so I keep on throwing whatever ideas I have. I just write it on a blank page. ठीक है कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. And I think I'm a little different in a sense कि I know for a fact that you do not approach copy with a structure in mind, but I do approach copy with a structure in mind. Okay. I think ये हम लोग का difference था, because you said कि it hinders and limits you. ठीक है,
For me, I approach copy with a structure in a sense कि मुझे होता है कि ये सारे elements मेरे cover हो जाए और सही since सही मेरे सही घर में distraction बहुत है और chaos बहुत है तो मुझे होता है कि you know and I go with the structure in head और मेरा structure बड़ा And I think it's a good thing, Anam, to be honest, that every copywriter, they have their own process. That is why we are talking about your process now. So you approach it with a structure in mind, like आपके mind में होता है, like I have to cover pain points. अच्छा मैंने ये करना है, मैंने इतने solutions को करना है, product को ऐसे build up करना है, अच्छा मैंने how it works को भी cover करना है, who is it for को cover करना है, ये नहीं करना, कितने closing stacks डालने हैं, and all that. So I appreciate it. Like this is why you are here. मेरा process different है. बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, स्टूडेंट्स को तो पता ही है, you but and yours I is both are different. successful, right? So if Yeah, somebody that's else has fine. a different product, Exactly, different way of exactly. working. So that हाँ. is good, and I like this fact about AKC के everybody is open to try different things. ठीक है, हम कुछ discourage नहीं करते हमारी नहीं. community में as far as it's working. AKC is all about trying things as long as it is working with guidance, with parental permission. अगर कुछ नया try करने लगे हो, come to me first, get it verified, go ahead and try it. Moving on, you are super fast when it comes to churning out good copy. And what is your secret? I know okay, like as a solo copywriter, you're churning out multiple different projects every single day, different niches. I know मैं भी कर रहा होता हूँ, आज तक कर रहा हूँ, I know, but how do you do that? What is your process? I want to know as well. Maybe I can find a new perspective, you know. And our यार viewers also want to know. जितना तेज मैं बोलती हूँ ना उतना तेज मैं लिखती भी हूँ अच्छा फिर टाइपिंग स्पीड भी तेज है इसका मतलब. probably but वही वाली बात कि write copy in a way you speak, right? That is the natural element of approaching a copy, right? So I usually do that. मेरा angle ये नहीं होता. One thing, I never attempt to get copy right in first attempt. ठीक है, मैं सिर्फ लिखती हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह का, इस तरह. Then I edit. And अच्छा. I think you also know for a fact that I leave it, I sleep on it, then I come back the next day and I edit it again. अच्छा, ये couple मेरा- of my other students also do that, so I can relate with that. मेरा थोड़ा सा मसला है कि I think मैंने ये चीज इसलिए शायद establish कर ली है कि I had to do a lot of projects, especially in the beginning. एक ही दिन में I also didn't have a team. पाकिस्तान में copywriters की team would find out करना is not an easy thing. अब अल्हम्दुलिल्लाह we have a community of AKC जिधर से अच्छे copywriters बाहर निकल रहे हैं. And I have the opportunity, my other team members have the opportunity to hire good writers, good copywriters. So I think मेरे केस में I am like churning out good copy like तेजी से. I don't think I sleep on it most of the time, but you sleep on it, and couple of my other students also do that. I think it's a very good practice, especially if you have time. I think when you go back to a copy, you look at it with a different perspective, with a different angle. मैं जब खुद अपनी copy को कभी-कभी review होने के बाद पढ़ रहा हूँ, even though clients have loved it, तो मुझे लगता है कि I could have done something differently, you know. But again, when you're like churning मुझे out तो multiple अपनी projects, कॉपी पे कभी-कभार जबरदस्ती स्लीप ऑन इट करना पड़ता है क्योंकि एज यूजुअल मेरे घर में chaos रहता है, राइट? क्योंकि वंस मैं भी काम कर रही हूँ फिर बीच में कोई आ गया, होमवर्क करा दें, खाना खिला दें, शावर करा दें, यू नो तो मुझे तो ब्रेक लेना ही लेना है. तो द थिंग इज कि वंस आई ब्रेक दैट क्रिएटिव प्रोसेस, it also helps me in a sense कि उस वक्त तो मैं zone में होती हूँ ना कि अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया. When I take a break and I come back to it, maybe after 40 minutes, 30 minutes, ठीक है, even after few hours, then जब मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ मैं बोलती हूँ नहीं, this doesn't make sense, ठीक है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही है. तो I think I'm also at the same time trimming my copy and editing my copy. तो yeah, so I think उस angle and से copy edit is very different from a content edit. Big legendary copywriters, everyone says that a copy edit is a completely different thing. Dan F. Kennedy ultimate sales letter में पूरा इसके ऊपर section है उसका. He tells you that how copy edit is a thing, is a complete thing, that you look at your copy again and this time you edit it in a very systematical process. So that's what you do. You write your copy first, like एक rough draft आप बना लेती हो, and then you come back to it after 40-50 minutes. और आपकी मजबूरी भी है, which is a good मजबूरी, I would say, कि मजबूरी की वजह से you come back to it, and this time you realize that there are so many things that you can actually change. So before we move on, when I have to write वो small copy ना जो cognitive
एबिलिटीज वाली कॉपी होती है जो बहुत ही स्वीट एंड you get what I mean, right? तो उसमें फिर मुझे होता है कि once my kids have gone to sleep or they are at school, जब बिल्कुल खामोशी है और मेरा दिमाग 100% ऑप्टिमल काम कर सकता है तो मैं करती हूँ. अच्छा ऐसे भी होता है, मेरे साथ तो होता है. व्हेन यू आर राइटिंग लाइक वन ईमेल, मुझे एक ईमेल मैंने लिखना था, उसके बाद मैंने एक ऐड लिखनी थी, उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी थी. समटाइम्स व्हेन यू गेट इनटू दैट मोड, लाइक एक ईमेल लिख के कुछ भी नहीं करना, एक सेकंड की भी ब्रेक नहीं लेनी, अगला प्रोजेक्ट खोलना है, उसको करना है, कुछ भी नहीं करना, ब्रेक नहीं लेनी, अगला खोलना है, और एक ही गो में सारे करने हैं. कभी कभी जल्दी हो जाता है, ब्रेक ले लो तो फिर यू प्रोक्रेस्टिनेट, और आपका एक वो फ्लो, एक वो क्रिएटिव माइंडसेट मेरा ख्याल है वो यू लूज इट एट सम पॉइंट. सो आई थिंक आई डू दैट एट लीस्ट व्हेन आई एम राइटिंग. आई एम लाइक ऑन फायर, यू नो, दुनिया साइड पे गई, आई डोंट नो, लाइक आई एम इमर्स्ड इनटू रिसर्च एंड राइटिंग एंड दैट फ्लो. सो मूविंग ऑन, बल्कि क्वेश्चन लाने से पहले अगेन आई वांट टू continue talk to my audience. Guys, if you are still here, प्लीज शो सम फायर इन द कमेंट्स और बताइए आपको अभी तक कैसा लग रहा है. हमें भी फीडबैक मिले, हम आपस में बात कर रहे हैं, बट वी वांट टू नो कि आपको कैसा लग रहा है. क्या आपके माइंड में जो क्वेश्चंस थे वो अभी तक कवर हो रहे हैं, और अगर कोई और क्वेश्चंस माइंड में है सो उनको बताइएगा कमेंट सेक्शन में. वी विल टेक देम, मतलब हमने लेने थे. वी आर गोइंग टू हैव अ Q&A. So that's we have Shah Zaman in the chat, I think. So Shah Zaman can forward some questions to me in the private chat. Shah Zaman, if you can find something good, you can tell me. अगर मुझे खुद कुछ नजर आता है तो मैं भी उनको उठा लूंगा. मैं पहले चाह रहा था कि जरा हम जल्दी से अपने मेन क्वेश्चंस जो हैं उनको जरा गो थ्रू कर लें, उसके बाद इधर से भी क्वेश्चन, क्योंकि इधर से एक दफा लेने शुरू किए तो देखना क्वेश्चंस रुकने ही नहीं है, फिर हम यहीं पे ही टाइम लग जाना है. So next, and I think it's something that everyone faces once you scale to a particular income. So what's the biggest roadblock right now for you as a high income copywriter? Because कुछ ना कुछ roadblock भी होता है. Now that you are making 400,000 per month, how do you sustain it, and how do you intend to scale from here? Sustainability is my biggest roadblock right now because alhamdulillah I am on that Fiverr वाली position मेरी बड़ी sweet हो चुकी है कि I constantly do get project के लिए questions वगैरह and वो, तो I am on a very thin ice right now. Thin ice in the sense कि if I keep on saying no to people, पता है कि you end up getting de-ranked and stuff. But at the same time, I want to keep my position. So I think I am, in a sense, कि वो जो scalability वाली चीज़ है ना, I'm hitting that. I think I will have to orient into a mini agency at some point in time now. To further, या तो फिर मैं ये करूँ कि I increase my rates much more, but I don't know how that will, impact my position. So yeah, it's a phase of experiment right now. I think live ही बता देता हूँ. I'm gonna give you a live recommendation. I think you definitely need to get people into your team right now. Rates बढ़ाना at it's feasible to some extent. बढ़ना शुरू हो जाएगा. No. I don't think you would be hiring directly from the public group. I think if you hire someone, it would definitely be from the private group. एक किसी का कोई ना कोई स्टूडेंट ही होगा definitely. What do you think actually? You think you could hire someone from outside AKC as well? Yeah, you think AKC is actually important to have, like किसी को उठाने से पहले अगर वो proper training ले चुका होगा, that is what you are looking for, नहीं भाई, साफ सी बात है, I don't have the time to train anybody. ठीक है, I cannot babysit somebody else. मेरे दो बच्चे काफी है मेरे लिए. So I would rather have somebody who already knows their, knows and what guys, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन चैट में से लूं, मैं लेने लगा हूं. सारा ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है. That is also something you get. अब AKC के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह we don't just have students की community, we have hirers की community, we have clients now. Anam is a client now, Maz is a client now, Shah Zaman could be hiring people very soon, Manur is already hiring, we have Hasham who is hiring, we have people inside the AKC family who are hiring other copywriters now. So when you become part of the AKC program, मैं बहुत सारे जूनियर स्टूडेंट्स को जानता हूँ. जूनियर से मुराद ये है जो रिसेंट बैचेस के ग्रेजुएट हैं. दे आर वर्किंग विद माज, मानूर, मी. दे कुड बी वर्किंग विद अनम नाउ वेरी सून. सो another very big plus, I would say, and I am very proud of this community that we have built here. Alhamdulillah. Moving on,
सारा उमर ने ये क्वेश्चन पूछा है, फैमिली में कोई गैदरिंग, कोई शादी हो तो तब कैसे मैनेज करती हो? मैंने कहा बीच में जरा मर्ज कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन उधर से भी ले लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा आप इसको लकी समझ लें। आई लिव वेरी फार अवे फ्रॉम माय फैमिली। I live in a nuclear setup. I live in Islamabad. Most of my family lives in Karachi. So I don't, मुझे नहीं जाना पड़ता अकीकों में और शादियों में बहुत ज़्यादा। So that is one thing. So my time is actually my time. But अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जो कि डेफिनेटली होती है, इमरजेंसीज होती हैं, मेरे बच्चे को आर्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा और so always timeline your projects to deliver in advance. मेरे project की timeline is 3 to 4 days, but I usually deliver by 48 hours. You are a fast deliverer, I know that. आपकी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द कर लूँ जितना जल्दी हो सकता है। हाँ, क्योंकि मुझे होता है कि I do not know कि मेरा future time में क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, कोई स्कूल फंक्शन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। So I would rather. So you don't delay your project till the last minute. आपकी यही कोशिश होती है कि मैं जितना जल्दी। I used to be a very huge procrastinator. I think I'm still am, but I've been trying to work on that very much. तो क्योंकि मुझे होता है कि I don't know what the future holds, so I rather जो time अभी है उसको मैं Netflix करके ना उड़ाऊं, अभी काम कर लूं। ये वाला जो माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, this is what gets you places कि यार Netflix की बजाय कुछ लर्निंग कर लूं। मेरा भी यही होता है, when I find some time I'm like reading a book or something, you know. कोई YouTube वीडियो देख रहा हूँ मैं मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, मैं ये करती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसी को खोल के तो ये देख लो। Okay, moving on. What are main elements you include in short form copy? Means must have elements and tell us about the structure. अच्छा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, it would take you hours, but एक बेसिक सा बता दो। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, फरूख अब्दुल्ला ने पूछा है। Short form copy in a sense what? Learning, email, ad. Let's talk about ad or email. You know, इसको short form consider कर लेते हैं। Short form copy, email और ad अगर लिख रही होगी, so what are the elements of copy that you include in it, and what does your structure look like? What do you think that you have to include? Okay, let's talk about email. I think email में तो फिर if you are sending an email about a product, email अगर आप किसी आपकी physical product कर लेते हैं, product है और उसको है, तो what does that product solve? Let's go back to the glass वाली example. इस ग्लास से क्या होता है, क्या कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है ऑडियंस ही मेरी, ठीक है, ये कितने का है और इसके क्या फीचर्स हैं। एंड आई थिंक if you start from the way would you like to have a new cup that you want to try this falana out, the thing to वही वाली बात है, hook, right? You start, मैं तो बहुत ही डायरेक्ट हूँ। आई थिंक ये बात भी मैटर करती है कॉपी में कि what kind of writer you are. I am personally a very aggressive writer. I remember when you used to say, why do you directly open from a question directly? But I remember. आपकी personality झलकती है आपकी copy में, and exactly. and I think that is one of the very reasons कि आप अपनी के writers जो है ना, the clients भी writers को favor भी करते हैं। in a sense कि they see कि भाई ये personality oriented copy आ रही है। So exactly. I am one of those people, especially with email. मुझे लगता है 200 words is nothing, right? And 200 words में to deliver the message, so मैं तो foreign get go से दरवाजे से निकलते साथ ही attack. मैंने कहा भाई आपको चाहिए नहीं चाहिए, सही अगर चाहिए तो इसकी फीचर्स ये हैं, फलाना है, और बस उसके बाद नीचे CTA चिपका बोले अब तो खरीदना ही खरीदना है, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपकी जिंदगी कहाँ जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, जिंदगी को मुश्किल नहीं किया हुआ ना अपनी ना क्लाइंट की। इससे पहले I think a lot of new writers they overthink as well. बहुत overthink करते हैं, मतलब कि मैं लिखूं क्या। I think ये हमारे ग्रुप में भी बहुत सवाल आता है, where do I start, how do I start, मैं लिखूं क्या। हाँ एग्जैक्टली ये पब्लिक ग्रुप में डेली ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आप लोग इसका आंसर सुन लें कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। लाइक ऑल यू हैव टू डू, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ओपन विद अ हुक, dive straight into their problems, then like transit towards your product, how it solves that problem, like give couple of features benefits, and then just go straight into CTA. Like this is the safest approach. You cannot go wrong with this. अगर आपने research कर ली है, if your pain points are on point, and if you have learned about the product,
सही से, you know what it like the benefits of the product, and then you know how to give a good CTA. I think this is something where you cannot go wrong. And email copy and ads copy में तो ये चीज definitely this is the best practice to do. Yeah, when we talk about website copy, जो कि अभी अनम की हम आपको दिखाने भी लगे हैं थोड़ी देर में स्क्रीन पे ले जाके, and you will be able to see that it is a bit of an advanced level copy. उसके लिए you need to have like a different approach, थोड़ा सोचना पड़ता है, and you have to use all your copy knowledge and elements. But when it comes to emails and ads copy, it can be as simple as you want it to be. So moving on, अनम, मेरे पास 2 क्वेश्चंस थे. उज़मा ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन, और मैं उसको खोलना चाहूँगा अपने सामने. खुला हुआ एक्चुअली ऑलरेडी, मुझे नज़र नहीं आ रहा था. तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ. स्क्रीन पे मैं शायद नहीं दिखा पाऊंगा, किधर गया मेरा स्ट्रीम यार्ड. ये कमेंट को मैंने बंद करना है, ये हाइड हो गया. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इमरजेंसी वाला पहला पॉइंट था उनका कि इमरजेंसी में आप क्या करते हो. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट. दूसरा उनका क्वेश्चन था, व्हाट डू यू डू when you hit a writer's block, and how does your average day looks like? So what do you do when you hit a writer's block, and what does your average day look like? Do you ever hit a writer's block? Good question. Writer's block, I don't think, writer's block is probably different for everyone, right? I think it's a very personal thing in a sense कि writer's block आप क्या बोलते हैं, आपसे लिखा नहीं जा रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, आप बोर हो रहे हैं अपनी चीज से. I think writer's block is very relative to what a person, for everybody, right? It's probably different for you. It's probably what happens to you as a writer's block is probably different for me. When it comes to, जब मुझे लगता है ना कि I am not able to concentrate, and if I am hitting that कोई वाली बात writer's block, मैं अपना लैपटॉप शट कर देती हूँ. I just leave it. ठीक है. I think I need. I usually end up in a gym. अच्छा ना, मैं एक बात यहाँ मैं पॉइंट ऐड करूंगा इससे पहले मैं भूल जाऊं. ये राइटर्स ब्लॉक के ऊपर आई थिंक यू वुड एग्री विद मी, ये स्टार्ट का ही मसला है. व्हेन यू आर राइटिंग कॉपी एवरी सिंगल डे, आई थिंक ये चीज खुद ब खुद डिसअपियर होना शुरू हो जाती है. यू जस्ट नो हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू गो. आई थिंक व्हेन यू आर इनटू कॉपी एवरी डे, जब आप 3-4-5 प्रोजेक्ट कर रहे होता है, आई थिंक राइटर्स ब्लॉक ऑटोमेटिक लाइक मुझे राइटर्स ब्लॉक अगर फील हुआ है बहुत अरसे के बाद, दोबारा दुबई के बाद हुआ. आई वाज इन दुबई 12-13 days probably. मैंने कोई कॉपी नहीं लिखी. When I came back, that is the first time I felt writer's block because I had taken a 12 days break. कुछ छोटी मोटी चीज मैंने लिखी होगी वहां बैठ के, but I took a big break. Your vacation mode. So that's not a writer's block. That is. I think मैंने आपको भी मैसेज किया था ना. I think I messaged you when I came back from Dubai. I was like, Anam, I am having a writer's block, and I'm actually having an imposter syndrome even. So you told me the same thing at that time as well, that you might still be in the vacation mode because मेरे से पहले you were on vacation, right? You were in Karachi, I believe. Yes. तो उस केस में तो it can happen, like 12-13 दिन का gap आ गया. But when you get back into copy, when you're writing copy every single day, 2 projects, 3 projects, whatever, I think writer's block पीछे वैसे ही रह जाता है. So all you have to do is like get started. And दूसरा, I think writer's block को क्या कहेंगे, to push through that thing, बहुत अच्छा एक element ये है कि read something, right? उसको उसी niche से related खोल के चीजें देखें, किसी और की ad copy पढ़ के देखें. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उसवा ने पूछा है, हाउ डू यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम बर्नआउट. इसके बाद जो है एक क्वेश्चन हम अपना लेके उसके बाद आपकी कॉपी की तरफ चलेंगे. हाउ डू यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम बर्नआउट, बिकॉज़ दिस इज अ रियल थिंग व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल कॉपी. That is a real one. जब मेरे पास बहुत लोड होता है कॉपी का, जो कि बीच में I think there was a point when I had so much work. I was like, oh my god, I think I like the money, but at the same time this is getting out of hands. So to save myself from burnout, I always take time out for myself. ठीक है. जो हमारे खास, I will address खवातीन in the sense कि होता है ना कि मेरे पास अनम बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, मैं भी ऐड करूंगा. यू वुड laugh at it and you would agree with me, but carry on. एक और पॉइंट भी है जिसमें ऐड होगा. तो मैं खवातीन से मैं ये बोलूंगी कि हमारे तो when it comes to women, it's always like घर है, ये है, बच्चे हैं, फलाना है. So women take a seat back,
right? Our lives become lives of other people, and we start viewing our lives from their perspective. So I think to save myself from burnout, I always keep myself first. You call me selfish, you call me somebody, but मुझे होता है कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, I straight away go to gym. ठीक है, I take my time, मैं 1 घंटे बाद वहाँ से आती हूँ. इस वक्त मेरे पास सारे कॉपी के प्रोजेक्ट्स और ये सब चीजें हैं. ठीक है, it's not like कि I take time to my kids go out for cycling, so we go out for walking. मतलब this is a normal lifestyle for me. मैं अपने काम को भी अपने ऊपर सवार नहीं करती. And you're not selfish by any means if you're just trying to stay mentally sane. आखिर आप अर्निंग कर भी किसके लिए रही हो? You're doing it for your kids' future, for kids. So I don't think you are ever selfish as a mother. I think everything that you are doing, you're probably doing it for the better future of your family. I mean in a desi mentality, that's the thing, right? Because we do that. वही हमारे होता है कि उसको कमाने की जरूरत क्या है, and it's a very fact thing. कि why do you need to earn? Like I am so done with that question. Do not tell me. ये तो वही बात है. Like why do you need more money? Like बस गुजारा हो जाए तो बहुत है. Like why do you want to get rich? Why do you have to have more money? This is a real question. People are like यार अमीर होके क्या करना है? भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको 10 रीजंस ना अभी बैठ के दे दूं. मैं अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूं किसी में, उनका माइंडसेट डेवलप करता हूं कि व्हाट यू कैन डू इफ यू हैव मोर मनी. एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं. किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है ना, एंड यू वांट टू करवाना चाहते हो, आपका दिल कहता है यार मैं किसी तरह इनको दे सकूं. यू कैन डू दैट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट. आई डू दैट अल्हम्दुलिल्लाह. बताना नहीं चाहिए करके मुझे कहीं पे फील होता है ना, लाइक यार यहाँ कंट्रीब्यूशन बनता है, यार ये बंदा डिजर्व करता है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू डू दैट विदाउट second guessing, without even thinking about it. I just pick up my phone and I make the transfer and it makes me feel so good. Just one example. बाकी तो tons हैं, मैं उसकी तरफ जाता ही नहीं हूँ. क्यों पैसे कमाने चाहिए? क्यों? You would hire other people. You build a brand, you would hire other people. Other people will depend on you. उनका घर चलेगा आपकी वजह से, वो ग्रो करेंगे. I can go on and on. यार वही वाली बात है कि money, yes it does run the world around, but at the same time it empowers you to do much more good. अब जरूरी है कि ज्यादा पैसा कमा के गलत काम ही किया जाए. अच्छा दूसरी बात, एक और बात कर लेते हैं. कॉपी से थोड़ा डीरेल हो गए, बट दीस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. लोग कहते हैं यार पैसे को सलाम होता है, लोग पैसे को सलाम करते हैं. एक मैं बात आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, पैसे को सलाम होता है, इसमें कोई शक नहीं. क्यों होता है? What does money represent? It represents success. It represents success. Unless you got it from inheritance, किसी के बाप की जायदाद आ गई, that is one thing. उसके अलावा अगर कोई बंदा अमीर है, प्राडो से उतर रहा है, एक अच्छी गाड़ी से उतर रहा है, अच्छे सूट पहन रहा है, अच्छा घूम फिर रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल है, it actually represents that he is a successful person. और सक्सेसफुल बंदा तब भी होता है जब वो हमारी तरह, मेरी तरह, अनम की तरह, बहुत सारे और लोगों की तरह बैकएंड पे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, इतना कुछ कर रहे होते हैं, हाई इनकम स्किल्स सीखी होती हैं, उनको डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, हार्ड लाइफ होती है उनकी, आम लोगों की निस्बत कुछ स्पेशल, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं वो एवरी सिंगल डे. इसीलिए वो इतने पैसे कमा रहे होते हैं और इसीलिए पैसे को सलाम होता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट सक्सेस. और सक्सेस को हर कोई पसंद करता है और सक्सेसफुल लोगों की हर कोई रिस्पेक्ट करता है और करनी भी चाहिए, बिकॉज दे आर अनलाइक अदर पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग नेटफ्लिक्स या फिर वेस्टिंग देयर टाइम. दे आर डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ. और ये जो क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, क्वेश्चन था हाउ डू यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम बर्नआउट. मैं यहाँ ऐड कर दूं ना, एंड यू वुड एग्री विद इट. बहुत सीरियस बातें होगी. डॉलर्स. When you're actually getting paid tons of dollars for every copy, अगर आपको $100 मिल रहा है ना 1 घंटे का काम करने का, 1.25 घंटे का, बर्नआउट खुद ब खुद चला जाता है भाई. आप 17,000 रुपया ले रहे हो ना 1 घंटे का, बर्नआउट आपको बहुत मजा आता है कि यार आप कहते हो यार 1 घंटा किया है, अच्छा अभी 1 घंटा एंजॉय करने के बजाय घंटा और कॉपी लिख लेता हूँ, 17,000 मजीद कमा लूँ, वो ज्यादा I would point out in that sense, since I have been, अभी मैंने सवाल यहाँ पे देखा था कि was she a content writer before? Yes I was. मैंने 10 साल content में काम किया है. I also feel कि कंटेंट में मेजर बर्नआउट आता है, क्योंकि कंटेंट में आप इतनी खप लगती है, मतलब आप इतना पढ़ के फिर आप एक कंटेंट की शक्ल निकालते हैं. कॉपी इन दैट सेंस इज वेरी रिवॉर्डिंग, क्योंकि कॉपी आप जो है छोटी सी लिखते हैं और उस पर आप ठीक ठाक ज्यादा कमाते हैं. सो दैट इज वन रियली बिग ह्यूज फॉर कॉपी. आगे चलते हैं और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं, उसके बाद आपकी कॉपी की तरफ चलते हैं. इफ यू गाइस आर रेडी, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है अनम से, उसके बाद हम इंशाल्लाह
अनम की वेबसाइट कॉपी पढ़ते हैं, देन वी हैव टू वाइंड इट अप, लंबा हो गया काफी. What would you say about your experience? Sorry, What would you say? your experience with AKC program, and would you recommend the AKC program? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम चलते हैं आपके कॉपी की तरफ. The AKC program literally changed my life. This is, I am not joking. I am not trying to fool somebody. और मेरा मुझसे कोई वो नहीं लगा हुआ affiliation कि मुझे साइड में कुछ मिल रहा हो. This is 100% fact कि it did change my life, and it maybe income has gone from 5 times to 6 times what I was earning before that. So highly recommended, 100%, 200%. Okay, fair enough. Thank you so much, Anam. आपने तमाम क्वेश्चंस का आंसर किया होल हार्टेडली और बड़ा खुल के, without keeping anything. That's what it's all about. We are spilling the beans, we are sharing the secrets. मैं तो टू बी ऑनेस्ट, मैं हो गया, अब आप लोग हो गए, हम सब लोग यार, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा बस चले ना तो हम इसी सेशन में बैठ के मैं सारी कॉपी भी सिखा दूं अगर ऐसा पॉसिबल होता. बस पॉसिबल नहीं है, वरना मैं सारा कुछ यहीं बता देता. हमें कुछ रखने का जरूरत ही नहीं होती. मैं यूट्यूब चैनल पे भी सब कुछ बता रहा होता हूँ, बट बिकॉज कॉपी इज अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रॉपर प्रोग्राम, हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. वरना मेरा बस चलता तो मैं यूट्यूब पे भी सिखा देता. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री की कदर भी कोई नहीं करता, तो फ्री में सब कुछ दिया जा भी नहीं सकता, उसको वैल्यू कोई नहीं करता. अच्छा खैर, और फिर मैंने अपने टाइम के हिसाब से भी चलना होता है, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत अपने अंदर इन्वेस्ट भी करना होगा. ये भी व्हेन यू इन्वेस्ट इन समथिंग यू एक्चुअली टेक द क्लासेस ना. पैसे लगे होंगे तो क्लास भी लोगे यार, वरना यू वुडंट टेक इट. तो फ्री को कोई वैल्यू नहीं करता. प्लस मैं फ्री में इतना टाइम दे नहीं सकता, बिकॉज अगेन जैसे अनम ने कहा है वो बर्नआउट वाली बात, हमारा टाइम एक्चुअली वैल्यूएबल है. वी आर चार्जिंग hundreds of dollars every single hour, so we have to charge for our time. Anyways, are you guys ready to see a very highly praised website copy जो अनम ने लिखी है? बहुत सारी बातें सुनी है. It's time to see what अनम writes. मैं अनम को थोड़ा पीछे कर देता हूँ. अनम आप सामने तभी आएंगी जब आप लोग यहाँ पे चैट में मुझे बताएंगे how excited you are. और उसके बाद मैं अनम की कॉपी को स्क्रीन पे पुल आउट करूंगा. अनम आप अपने एंड से बैक एंड पे कॉपी अपने पास निकाल लो. मैं पहले बच्चों को रिव्यू दिखा दूंगा जो आपको कॉपी पे मिला, और उसके बाद मैं इनको कॉपी दिखाऊंगा. तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं हाउ एक्साइटेड यू आर इफ यू वांट टू टेक अ लुक एट व्हाट अनम रोट एंड हाउ अनम राइट्स, और किस तरह की कॉपी होती है जो वो डेली बेसिस पे लिख रही होती है. टेल मी इन द कमेंट्स. मुनव्वरा कह रही है जी मैं स्पीकर ऑन करके मामा को सुनवा रही हूँ जब उन्होंने, ताकि उनको सुनाई दे कि क्या करना है जॉब करके. उसके आंसर पे फायर आए यार, थोड़ी सी और फायर है, मजा नहीं आ रहा. मैं ऐसे तो मैं अनम को लेके ही नहीं आ रहा. मैं जरा वो खोल के रख लूं पॉइंट अपने सामने. अच्छा जी 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 अच्छा, ये मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन. आप लोगों ने कुछ फायर शो की है, अच्छा लगा है. आई लाइक इट, आई अप्रिशिएट इट. थोड़ी और आ सकती थी बट इट्स फाइन. आई एम गोना शेयर स्क्रीन. स्क्रीन शेयरिंग इज इजीएस्ट विद 2 मॉनिटर्स. स्क्रीन शेयरिंग वर्क्स. नहीं यार, मैंने एक ही मॉनिटर शेयर करना है. मेरे हैं तो 2 ही, बट आई वांट टू शेयर screen 1. Allow. Okay, I think my screen is now being shared. अच्छा, ये रिव्यू है जो अनम को मिला है और उस कॉपी के ऊपर क्लाइंट की तरफ से, एंड आई एम गोना रीड इट. और कॉपी अनम खुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उन्होंने अपने पास पुल अप कर ली होगी. आई हैड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस working with Anam. She managed to capture everything I wanted my brand storytelling to convey, and I couldn't be happier with the end result. Would 100% recommend working with her, and will definitely be doing so myself as well. So that is how the client liked it. और अब मैं स्क्रीन के ऊपर खोलूंगा अनम की कॉपी और फिर मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा. एक सेकेंड. अनम 2 भेजी हैं आपने मुझे फाइल्स. एक होम पेज अबाउट पेज है और एक डिस्क्रिप्शन है. क्या पढ़ना है? होम पेज और अबाउट पेज पढ़ लें.
हाँ होम पेज खोलना था. होम पेज खोल ले भाई, होम पेज मेरे सामने खुल गया. और एक सेकंड देना ज़रा मुझे, मैं ज़रा इसको फॉर्मेटिंग कर लूँ, बड़ा कर लूँ इसको. किधर है मेरा स्ट्रीम यार्ड? शेयर स्क्रीन. यकीन कर लो गाइज, ये पार्ट ऑफ इंटरव्यूज नहीं होता कि आपको साथ साथ कॉपी भी दिखाई जाए. कॉपी भी दिखा रहे हैं, ये देख लो. अब चलो जी, ये आगे भी कॉपी आप लोगों के सामने. आई होप यू गाइज कैन सी दैट. तो अच्छा, बिफोर वी डिग इनटू दिस कॉपी, आई थिंक मैं पहले ये समझाना चाहती हूँ इस कॉपी का चैलेंज क्या था. This product is Lunar Leaves company का नाम था, and what they do is they sell teas. ठीक है, सुनने को तो बहुत आसान लग रहा है, आपको जनरली आपको चाय बेचनी है. But the challenge of this project was कि they weren't selling a tea, they were selling an experience. ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी चाय के प्रोडक्ट को माइंडफुलनेस से अटैच किया हुआ था. सो द एंगल वाज कि जब कोई बंदा इनसे प्रोडक्ट खरीदता तो उनके पास वो टी आती, ठीक है, एंड उसके साथ उनके पास एक जर्नल आता, पेन्स आते, स्टिकर्स आते, टैरेट कार्ड्स आते, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज का डेक आता. एंड द आइडिया वाज टू सेल माइंडफुलनेस. yeah, and that makes was the sense. biggest challenge of this copy, because product tangible and intangible product sell करना is very difficult. I think it makes a बहुत difference आता है उस चीज में. And मतलब दूसरा, it wasn't just about the tea, it was about what the tea represents in this case, और किस तरह से exactly it was, and they were trying to sell an experience. And दूसरा कि I think जब आप copies थोड़ा करेंगे और तो आपको आगे जाके challenge आएगा टोन का. ठीक है, दूसरा चैलेंज इस प्रोजेक्ट का था कि वी हैड द ऑडियंस वाज वुमेन एंड द टोन वाज द प्राइम चैलेंज. For a person like me who's a very aggressive writer, this was a huge challenge. I was like, how will I get the tone right? And it is very essential to get the tone right, because ये कॉपी जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप अपनी नहीं लगा सकते यहाँ पे कि भाई आई थिंक दिस इज द पार्ट. आप यू हैव टू ओरिएंट योरसेल्फ टू व्हाट द कंपनी प्रेजेंट्स. इसको पढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि what is the thought process behind a website copy and how it is different from other types of copy. I will Let's start. Okay, you can't pour from an empty cup. Press pause, slow down, and unwind with Lunar Leaves. Discover these soul-awakening, custom-crafted tea blends that go beyond the brew. Shop flavors, जो कि हमारा CTA था. अब we are हमारा going पहला down. सेक्शन है और ये होम पेज है, राइट? तो ये हमारा पहला सेक्शन है. This is the home page. मतलब हम कंपनी मेन पेज है, मेन लैंडिंग. Acha. Next, more than just a cup of tea. Sometimes all you need is a little something special to help start your day on the right foot. Introducing our custom tea blends paired with mindfulness activities, which will have you feeling refreshed and ready for whatever lies ahead. अब नीचे जो है मैंने एक जनरल कम्युनिकेशन ही कहेंगे इसको, कि मैंने ड्राफ्ट बना दिए थे कि यू नो द पर्सन शी को यहाँ पे पिक्चर्स लगा सकती थी, यहाँ पे CTA, मतलब जितनी टाइप ऑफ टी प्रोडक्ट्स थी वो हम यहाँ पे कर रहे थे. अच्छा, नाउ ये दिस वाज द चैलेंज ऑफ व्हाई लूनर लीव्स, व्हाई शुड दैट पर्सन, यू नो, व्हाई शुड अ पर्सन buy this tea. The tea of finest quality. Here at Lunar Leaves, we specialize in the finest quality ingredients for your cup. We import them from all over the world to ensure that our beverages taste as good. This is why every sip feels like pure bliss. Along with containing no artificial flavors and being found from more concentrations, these high quality tea leads not only towards greater refreshment but also healthier living overall. The tea that goes beyond the cup. The tea that goes beyond the cup, Lunar Leaves has a unique way of helping you find solace in your own company. Through added assortments that included guided meditation, audio tracks, and special notebook prompts for journaling about life's big questions, among other things, this will help remind people how much they need some time alone with themselves again. Like right now, we are attaching tea to the experience. The tea for all occasions. Tea with friend is an oldish tradition that has been around since the day when people gathered around a campfire to talk and share stories. Tea helps us bond in different ways. It can be shared over good conversation or taken as a comfort during tough times.
If you want to spend time with your loved ones, then a cup of tea is perfect. Throw a tarot tea party, brew tea to your liking, hot teas for dinner or cocktails for party. Lunar Leaves has tea for any and every moment. अच्छा, बिफोर यू मूव ऑन, अभी तक आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं कोई फैंसी वोकैबुलरी नहीं है, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट द राइट वर्ड्स, कम्युनिकेटिंग द आइडिया करेक्टली, और जिसे कहते हैं क्लैरिटी, फ्लो. Okay, move on. And these headlines, they are not easy to write. I'm telling you, as a copywriter, I'm telling you, these headlines are not easy. ये जो इतनी neat and clean, I love them. The tea that connects, the tea for journey within. Incredible work. Move on. The tea for journey within. Lunar Leaves brings you a new way to experience and explore the world around you and within you. These tins are perfect for traveling or just looking for something refreshing in your cupboard with 6 different flavors. Each tin contains 28 tea bags and a deck of 10 cards that cover a wide range of activities that encourage self-care and mindfulness. And then look at the next headline. This is जब हम customer testimonials की बात करते हैं, how Lunar Leaves is changing lives one cup at a time. Excellent. ठीक है. And यहाँ पे we wanted to attach some about us का angle over here. So please keep in mind कि ये home page है, ठीक है, ये main page है. This is not landing. तो I think this is also क्योंकि कोई comments नहीं आ रहे, तो I think लोग खामोश हो गए. नहीं. People are absorbing. I know that for a fact. People are absorbing. इन सब चीजों में pain points वगैरह नहीं होते. But anyway, of nostalgia, moon and teas. What if you could escape the pressures of life for just an evening? What would it be like to lose yourself in a world where your worries are left behind and all that matters is just you in that exact moment? That's precisely why this Singaporean brand came into being. Lunar Leaves became a sister brand to an already running book and tea cafe, The Moon. Basically, ये एक दूसरी brand का एक sister brand थी. मतलब these guys were already running a tea cafe and they started selling teas. So ये जो Moon वाला concept है, इनके cafe का नाम Moon था. And since they were talking about reminiscing the old experience of cafe time, because pandemic mein inka tea cafe band ho gaya tha, so this is where the heading comes from, of nostalgia, moon and teas. Okay. And then you ended with connect with Lunar Leaves and tea lovers like you. And then Instagram, Facebook gallery वगैरह कर सकते हैं. आगे about us page है, वो मैं खुद पढ़ूंगा. Give me the opportunity. I love to read stuff. I like the structure because as a copywriter, I can tell you this is an incredible structure. This is a home page, untraditional copy, of course. आप ऐसे कुछ लोगों को landing pages, emails और ये चीजें पढ़ने की आदत होगी. Home page is written very differently, and that is why we want you to show home page today and how Anam has incredibly done that. Headline is very neat. It's more than just a cup of tea. Instantly USP बता दिया, stand out कर लिया कि we are more than just a cup of tea. And then we are talking about the images. Then we are getting into the why Lunar Leaves and the incredible headlines, short, sweet ideas followed by descriptive, powerful words, benefit-oriented copy. And then there is how Lunar Lives is changing lives one cup at a time. There is the testimonials, and then there is the of nostalgia, moon and teas, and a very beautiful paragraph followed by that. And there is a call to action where it all began. I think this would take them to the about page, if I'm not wrong. Yes. And then connect with Lunar Leaves and tea lovers like you, and we take them to the Instagram, Facebook page. A very perfect example of a home page, of a website copy. Moving on to the about page, I'm going to read it, and Anam, you enjoy your own copy now. Sit back and enjoy. So this is the about page, guys. And I personally find about pages challenging even to this day. इतना आसान नहीं होता about page लिखना, मुश्किल हो जाता है. So it takes a lot of creativity. Reminiscence of what brings us together. Hi, I'm Sarah, your friendly chai tea lover behind Lunar Leaves, serial entrepreneur, and a few things more. What began as a अच्छा ये देखो smiley भी डाल दी है. You can do anything, untraditional okay, unconventional okay, and that is what I think Anam was talking about when she said that content could burn you out, it could get boring, but copy is like very जिसे कहते हैं ना मजे की चीज है. Like you are trying new things, you are like there is a lot of creativity, you can play around a lot. Okay, what began as a simple desire to recreate the magic of being at the moon for customers soon turned into a journey of self-discovery. After the lockdown in Singapore happened, I decided to pursue my passion for tea. And create a product that would help customers connect and foster conversation. Tea has always been something that I have been passionate about. I grew up drinking tea, and it's always been a huge part of my life. I love the process of selecting, making, and drinking tea.
It is something that I find really soothing. It helps me stay grounded and connects me to my roots. I wanted to create a product that would help people relax and connect. I believe that tea is a universal language that can help people connect and bridge cultural divides. Mindfulness, tea, and you. What is the secret to living a fulfilled life? At Lunar Leaves, we believe that one cannot pour from an empty cup. So, inspired by this mindfulness of brewing and drinking tea and self exploration, which comes with a tarot card reading, our team has crafted experiences designed specifically for you. We know that the process of brewing, drinking, and connecting over tea is an old age one, but we have paired this with a range of modern, mindful experiences to include journaling prompts, affirmations meditation, or tarot so you can slow down for yourselves while also filling your cup. Before moving on towards the next headline, I can see the research जो इसमें हुई हुई है and I can see the beautiful writing process जो इसमें हुआ हुआ है. As a copywriter, I can identify, and many other people who are now copywriters in the chat, they can see how incredible this is. Replenish your cup, revive, rejuvenate, rejoice. I like the 3 R's. It's easy to forget about ourselves when juggling the multiple roles and responsibilities of our lives. This can often leave us feeling overwhelmed, drained, or just not fully present in everything that is happening around us. It's crucial, then, for each one among us, men and women alike, to take some time out every now and then. Our tea experience is designed to take you on a journey of self exploration. With tarot cards, journaling prompts, activities deck, and more, they make the perfect take home retreat and relaxing time with friends or family members and personal development. Join us in this journey with love and care, so we offer you the chance to discover yourselves one cup at a time. Incredible stuff. आगे FAQs हैं. This was the copy, this was the home page, this was the about page. How much value was this, guys, and how did you like it? Tell me in the comments. Took a lot of effort from Anam as well as me. सुकून से बैठ के absorb करके कॉपी को पढ़ना और आप लोगों को इस तरह से दिखाना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू. 1 hour 30 minutes में इंटरव्यू जा चुका है और होस्ट के लिए और अनम के लिए, जैसे कि वो भी आज बोल रही हैं, आज हमारे साथ गेस्ट हैं, वो हम लोग थक चुके होते हैं. आप लोग तो आराम से सुन रहे होते हैं, हम लोग एक्चुअली how much did you charge for this? I don't think you have to answer that, Anam. It needs to be confidential. And I don't think it should be relevant anyways. She's charging good money. That's why she's making 2.5K per month. ठीक है, in dollars में बात कर रहा हूँ. तो no need to answer that. Next. चलें जी. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की सपोर्ट का और आप लोगों के इस तरह से जिसे कहते हैं हाइप रहने का, एक्टिव रहने का थ्रू आउट द सेशन. नेक्स्ट 5 minutes, we have 5 minutes where we will take some questions from the chat if you guys have any. उसके बाद हम जो है इसको ख़त्म करेंगे. Anam को I want to say a big thank you to Anam, a big shout out for giving us the time. I am on my phone right now, so hit me up with questions और मैं जल्दी जल्दी जवाब दे दूँ. Let's do a you have 5 minutes, guys. Anam is looking at your questions. Now is the time. किसी ने पूछा कि यार होम पेज इतना लंबा क्यों था, जरा जल्दी से बताओ. Isn't the home page a little long? Not really. ये तो काफी short home page था, in a sense कि हमने बड़ी short headings रखी थी and उससे relate किया था. So home pages काफी बड़े भी होते हैं, but I think this was relevant. I think this is 600 or 400 words. I'm not sure. But yes, एक cup tea please. Difference between home page and landing page. Landing page is whatever you land on. ठीक है? I'd say इस चीज पे मैं और Armish are working all these buzzwords and we have to do this. जो कि बड़े confuse करते हैं लोगों को. But in a short के home page, main landing page एक ही चीज कहलाती है. जो आप कंपनी का कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जो पहला पेज आता है उसको होम पेज कहते हैं. I don't think you have to go into the details of this. बहुत टाइम ले लेगा. लैंडिंग पेज, सेल्स पेज, होम पेज, इनके क्या डिफरेंसेस है? We are coming up with a glossary master class in the program B4, तो वहाँ पे चीजें कवर होंगी. हाँ, that is happening. Yes. Your favorite go-to place for research? Reddit. I love it. Reddit is my favorite place. Okay, I am here for a few minutes, guys. जल्दी post in your questions. How long did it take? हसन रजा पूछ रहे हैं. I don't. किसी ने कहा कितने दिन लगे हैं, पीछे किसी ने ये भी कहा कितने दिन लगे हैं ये कॉपी लिखने में. जरा इनको बताना कितना टाइम लगता है.
नहीं मुझे थोड़ा सा since this was a little difficult product तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था रिसर्च करने में, but I think I took like 1 hour 2 hours to research and I ended up writing. I did sleep on this copy and I went back and trimmed it again, so roughly 24 hours I think. 24 hours का मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे बैठ के लिख रही थी. ये देखें बड़ा मजे का क्वेश्चन आया है, ये कंटेंट राइटर ही होंगे नॉर्मली या कंटेंट राइटिंग को जानते होंगे, कॉपी का नहीं पता. मैडम, इज दैट ऑल योर ओन वर्डिंग और यू हैव रिसर्च फ्रॉम अदर आर्टिकल्स एज वेल? इनको बताओ यार. ये मैंने खुद ही लिखा है, पढ़ा 10 जगह से सकते हैं लेकिन 100% लिखा आपने. 100% प्लेजरिज्म फ्री होती है. You should know that. और I've just started go ahead. and purchased AKC basic course and completed first 2 hours of session. Now where should I start? Do I have to take 2 months course to earn from copywriting? भाई किसी भी स्किल को सीख के ही कमाना जरूरी नहीं होता, ठीक है. आप फॉरन स्टार्टिंग से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बट येस इफ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स तो डू जॉइन द मतलब प्रोग्राम से आपका when you're learning on your own you're experimenting. आपको 6 महीने लग सकता है एक स्किल को सीखने में, but if you take a course आपको from the get go पता होता है कि you know this is it, ये करना. तो would you rather like waste half of your year or would you rather do 2 months and do the course? Very good and practical answer. Anam, did you use LinkedIn for client acquisition? I do have a LinkedIn profile and I do get a lot of hits on that. But mostly since I live in Pakistan, मुझे पाकिस्तान related ही hits में मेरा नाम आता है, तो मुझे अब तक I think only one project I have done from LinkedIn, but yes, LinkedIn is a good place to brand yourself. गौहर पूछ रहे हैं what is your qualification? Anam is a full-fledged, fully trained copywriter now. ठीक है? That's more than enough. Direct response copywriter. Blog वाले copywriter नहीं है. हम वो वाले कॉपीराइटर नहीं है जिन क्वाइड और पीएस का हम ट्रेंड कॉपीराइटर हैं. Our degrees are irrelevant at this point, guys. Our degrees are irrelevant. We are direct response copywriters and alhamdulillah we're making a lot of money being copywriters. So we just want to talk about our copy. Is it difficult to manage with home and kids? बात हुई है यार इस पे बहुत डिटेल में बात हुई है. We are not. हर चीज difficult होती है but it is rewarding. So you do what you have to do. How would I approach a client? Go ahead. If I have zero experience in copywriting, you won't. Why would I don't think you would. would. Client if you have zero experience in copywriting? You shouldn't approach a client if you have no copy experience. देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. कॉपी की बेसिक्स को सीखना, एक अच्छी कॉपी लिखना एटलीस्ट आपको आती हो, फिर ही क्लाइंट को अप्रोच करो. वरना आप कर भी लोगे, गंदी कॉपी दोगे, उसके बाद वो आपके साथ दोबारा कभी काम नहीं करेगा, आपको आगे किसी को रेकमेंड नहीं करेगा. So you need to have a process. 2-month course is for above 40,000. Can I pay in installments somehow? अविनाश, पहली बात AKC program अभी हमारा बैच 4 स्टार्ट हुआ है. I think 3 weeks हुए हैं. It's gonna be a while since we until we launch batch 5. It's gonna be at least 2 to 3 months. जब लॉन्च होगा there is an installment option. सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी. अभी आपने probably workshop परचेज किया. That's what you mean. You have bought the AKC copywriting workshop. Go through the workshop. Go through my emails and ads copy samples and go through the copy breakdown session जो मैंने उसमें as a bonus add किया हुआ है. I think this is more than enough if you want to get started with emails and ads copy. ये दो चीजें, ठीक है. And the formula you can use is problem, agitate, solve. Just start with that, and I think that's more than enough answer that I could give you live. How long it takes you to learn this skill? Anam, what do you think? I think it depends. खुद से कर रहे हो तो it could take you 6 months to a year. If you are going through a program, it could take you 2-3 months maximum, and the right way. सबसे अच्छी बात ये you would have learned it the right way. Yeah, I would always say कि you and I both I think get the course expensive है, course how would and इसका मेरा जवाब बड़ा easy से ये है कि would you rather again waste 6 months to 1 year of your life trying to figure it out, trying to get somewhere कि भाई ये हो रहा है ये नहीं हो रहा, or would you like take a short condensed course and get to it? क्योंकि this is something I am 100% transparent about and I will tell you right now, मैंने जितना कोर्स में इन्वेस्ट किया था वो मैंने probably 30 days में रिकवर कर लिया था. ठीक है, there you have it. तो 40,000 प्लस का कोर्स है, जितने का भी है, she recovered it in 30 days and now she has multiplied it by 10, 15, 20 or whatever. बहुत ज्यादा. और बहुत से बाकी स्टूडेंट्स भी. एक चीज मैं यहाँ ऐड कर दूं, a moment of promotion. मैं थोड़ी सी प्रमोशन कर लूं. मुझे याद आ गया,
Chunki AKC program is still closed for enrollment for another 3 months or so. If any of you want to get started, you can go to armashkamal.com/workshop and you can get started with my workshop. It's a paid workshop, free mein nahi di ja rahi, it's a paid workshop, but the cost is really low compared to the amount of things that you're getting. Isse you can start email and ads copy, 100%, no doubt about that. Email or ad copy आप इस workshop के बाद start कर सकते हैं basic level के, and you can go for starting clients experience, hands on experience आप लेना start कर सकते हैं. ठीक हो गया? तो ये मैंने link यहाँ पे छोड़ दिया if you wanna. So we have like 1 to 2 more minutes. उसके बाद मैं इसको wind up करूँगा. If you guys have any more questions, I think you guys, we all had an amazing time. Anam, आपको कैसा लगा? Actually, let's not take any more questions anymore. Let's just answer this last one. In how much time you have reached to 400K per month? 6 months, and alhamdulillah for everyone I go a bit higher for everything. So another thing I would just like to add over here is कि अपनी income mindset से बाहर है. ठीक है, जो fixed mindset हमारे यहाँ है ना कि बस this is good, copy is incredible. ठीक है, it will open avenues for you. Just go with an open heart and try to do stuff. ठीक है, this ये जो उस चीज को छोड़ दें 100K और 85K और 90K उस चीज से बाहर आ जाए. बहुत अच्छी बात की है. कॉपी जो है ना, इसके बाद अच्छा अभी ये होता है ना, लोग कहते हैं यार 400,000 कैसे कमा रही होगी यार, 4 लाख रुपए, ये तो हो ही नहीं सकता. और बहुत इजीली हो रहा होता है जब आप इसको डॉलर्स में लेके जाते हो और जब आपको पता चलता है ना कि कॉपी के प्रोजेक्ट्स पे आप कितना कितना चार्ज कर सकते हो. ये ऐसे होता है, ये ऐसे बन जाता है. यार मैंने शाहजमान के इंटरव्यू में आपको दिखाया था, शाहजमान पता नहीं 447 की उसकी ऑफर है या कितने डॉलर्स की ऑफर है, 10 ईमेल्स की या समथिंग. और वो बता रहे थे शाहजमान कि उनको 15 मिनट लगते हैं एक ईमेल लिखने में. उससे हिसाब लगा लो. फिर कह रहे होते हैं यार ये 2.5 लाख 3 लाख महीने का कैसे कमा रहा है. मैंने कैलकुलेटर पे बना के दिखा दिया था. 2 घंटे डेली वो काम करे ना शाहजमान, वीकेंड ऑफ लेके, तो भी वो कमा सकता है 2.5 लाख. हम भी वीकेंड ऑफ लेते हैं. अनम वीकेंड ऑफ लेती है. अनम फुल टाइम कॉपीराइटर है. शी इज एबल टू डू दैट. सो अनम आपके ऊपर जाऊंगा, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा. व्हाट इज द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस और एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं. My last bit of advice would be अपने आप को underestimate ना करें. ठीक है, आपके अंदर you have a set of skills. Allah Ta'ala has given everybody some skills. उसको discover करें. Copy को as a challenge लें, but उससे सीखें और उसको implement करें. सिर्फ बैठ के सीखना is unless you really do something from your skills are just, you know, mad. So that would be my piece of advice, is to just go out and do something. Thank you so much, Anam. Thank you so much for being with us tonight. हमें time देने के लिए बहुत शुक्रिया. As a busy mom and a copywriter on top full time, I can imagine. Thank you so much for coming here and adding value to people's lives. Thank you so much for having me. You're most welcome. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. So let me move towards me now. Thank you so much to everyone, to our audience जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके. आई होप वी वर एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर लाइफ एंड आई होप दिस सेशन वाज वैल्यूएबल फॉर यू गाइस. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा. इंशाल्लाह हम करते रहेंगे. एक क्वेश्चन छोटा सा किसी ने पूछा कि विल वी लर्न गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम वर्कशॉप. वर्कशॉप के अंदर फाइवर जो है उसके ऊपर गिग्स कैसे बनानी है वो इंक्लूडेड है, आपको वहां से मिल जाएगा. बाकी डिटेल्स पेज के ऊपर है. सो दैट्स इट फ्रॉम मी एंड अनम. थैंक यू सो मच एवरीवन. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. इंशाल्लाह हम इसी तरह लाइव आते रहेंगे आप लोगों के साथ. लाइव कोई ना कोई वैल्यूएबल सेशन लेके आते रहेंगे. मुझे इजाज़त दीजिए, अनम को भी इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. स्टे सेफ, हेल्दी एंड सक्सेसफुल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.